Class 12. Now we have to take plane. As written here, plane is determined uniquely if any one of these following is known. The first one is normal to the plane and its distance from the origin known, and this one is specifically called the normal form of plane. Okay, the normal, you understand, perpendicular to the plane. Okay, next, then if we know a point on the plane and the perpendicular in the given direction. Next, if we know 3 points, 3 non-collinear points lying on the plane. So with the help of this also, when we'll know 3 points, we will try to find the normal or perpendicular to the plane, because only perpendicular to the plane can specify which plane we are talking about. Okay, so plane क्या होता है, जैसे ये है, this is a plane. Okay, so in this plane, suppose this pen is denoting any vector lying on the plane. So we can have so many vectors lying on this plane. Children, say this is one vector. इसको आप थोड़ा change करो, this would be another vector here. So we can have so many vectors this way, this way, this way lying on the plane. तो ये vectors किसी plane को specifically define नहीं कर सकते, because indefinitely बहुत सारे vectors हैं. So we cannot be specific. But when you consider perpendicular, suppose, okay, so this is one perpendicular somewhere here. If I shift it here, so all these perpendiculars to the plane are actually the same. They all are collinear vectors. So when we are considering vector normal to the plane, then that is specific. All right, so many vectors. There'll be one and only one normal. कि कहीं पे भी आप उसे प्लेस करो, तो इसलिए नॉर्मल उसको स्पेसिफाई कर सकता है प्लेन को. सो टू बी एबल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वी शुड जस्ट नो द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड दैट हेल्प्स अस write the equation. Okay, so as we'll take it one by one. The first one they are saying is normal to the plane. So normal to the plane, as they have said, in this case we will be knowing unit vector perpendicular to the plane, that is why n cap. Okay, and this is the general equation of a plane. R, I've told you, any point on the plane in vectors is denoted by a vector R, general vector. Okay, so R dot n cap, n would mean normal, unit vector normal to the plane, is equal to d. Then this d in this case gives you straight away the distance of this plane from the origin. Alright, so normal form में जब भी आपको equation of plane मिलता है, तो वहाँ पे जो constant होगा, that would correspond to distance from the origin. Alright, so ये तो vector equation है इसका. Now for Cartesian equation, this would be the Cartesian equation. Okay, r dot n cap था, ठीक है, तो n cap unit vector है, तो उसका the vector will be written as li plus mj plus nk. We know that for unit vector the direction cosines are taken into account as the components. Okay, so li plus mj plus nk, as they've shown you here, ये n cap की जगह आ गया, ये general vector आ गया आपका. Vector r has to have coordinates x, y, z, position vector. Okay, so ये इसका आ गया. So this is how you can reduce from vector form. जैसे हम line में कर रहे थे, vector form से Cartesian form निकल जा रही थी. Same way here, from the vector form only you can deduce the Cartesian form. Okay, so अगर ये आपके L, M, N है, coefficients of x, y, z, then in that case again you know this constant out here would be giving you straight away the distance of this plane from the origin. So that is important, what you have to keep in mind in normal form. Okay, now we will come to the more general one here, finding equation of a plane perpendicular to a given vector and passing through a given point. Okay, so that is the most general thing, that if you know any point, say A is any point on this plane, this is the plane जिसका equation हमें निकालना है. Let A be any point on this plane, its position vector will be, suppose, vector A. कोऑर्डिनेट्स उसके x1, y1, z1 ले लेते हैं, बिकॉज हम दोनों फॉर्म साथ में कर लेंगे. देन टू बी एबल टू राइट, एंड ऑल्सो वी नो द perpendicular to this plane. So perpendicular to this plane is, suppose, vector capital N. All right, now we will consider any point P on this plane. So we'll consider its position vector as vector R and let the coordinates be x, y, z. Okay, अब हमें इस plane का equation निकालना है. तो when we know point A and point P, we can join this to form vector AP. Vector AP will be R minus A vector, right? Now R minus A vector lies on this plane. So if it lies on this plane, any vector lying on this plane will be perpendicular to vector N. होगा?
n से एनीथिंग दैट लाइज ऑन दिस प्लेन, क्योंकि ये n प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो प्लेन पे कुछ भी होगा वो n पे परपेंडिकुलर होगा. Okay, and we know when two vectors are perpendicular their dot product is 0. So that has been utilized here to find equation of this plane. See here they've written vector AP dot n should be equal to 0. ये है perpendicular to the plane. Vector AP is a plane lying on the vector AP is a vector lying on the plane. Okay, so both of them are perpendicular, their dot product is 0. Okay, and vector AP बनाना हमारे लिए difficult नहीं था because position vector of P was R and position vector of A was given as vector A. Okay, so this gives you the equation of a plane having point A on it and perpendicular to a vector n. Okay, तो इसको हम further most of the times further simplify कर देंगे. This will be distributed inside. This will become as r dot vector n is equal to a dot vector n taken to the other side. Okay, now we know that dot product ends up giving a real number. Scalar product में हमें एक number मिलता है. It's not a vector. Okay, so suppose a dot n is some value d. तो यूजुअली हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा हमें, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी. आर तो जनरल वेक्टर हो गया, डॉट सम वेक्टर आउट हियर इज इक्वल टू सम नंबर. तो आपको पता है कि ये क्या है, आर डॉट समथिंग इज इक्वल टू दिस मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. दिस इज वेक्टर एन, नॉर्मल वेक्टर. ओके, right, now from here we will come to Cartesian form. So Cartesian form के लिए as I had said, a के coordinates अगर हमने लिए हैं x1 y1 z1, so vector a ये बन जाता है हमारा. We know that vector r ये बन जाता है xi plus yj plus zk, and vector n के dr's पता होंगे. Let the direction ratios of vector n be capital A, capital B, capital C उसने अभी बोला है. Then vector n will become ai plus bj plus ck. we've done that कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है तो उनमें आई जे के लगा के पूरा वेक्टर बन जाता है. ऑल राइट, नाउ कीपिंग बैक हियर r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन था. तो इनमें अगर ये r a एंड n वेक्टर्स आप रखते हो तो r माइनस ए वुड एक्चुअली बिकम x माइनस x1. लाइकवाइज y माइनस y1, z माइनस z1. आई जे केस डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i विद i, j विद j, k विद k सर्वाइव करेगा. सो यू एंड अप गेटिंग a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0. Okay, तो पूरा डेरिवेशन है, समझ में आ जाएगा तो रिमेंबरिंग becomes easy as I have told you, but you've got to learn what will be given to you. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. जैसे लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन गिवन होते हैं, इसमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर गिवन होते हैं. तो लेट ए बी सी be the direct DRs of the normal to the plane and it has a point x1 y1 z1 on it. Then the Cartesian equation of the plane will be a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0. Okay, okay, next form now children, if we have to find equation of a plane when we know three non-collinear points on it. So 3 points given on it as they have shown you out here. Suppose what have they named it as r s and t, कुछ भी हो सकते हैं. ओके, ए बी सी कोई भी पॉइंट्स हैं. लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ दो 3 पॉइंट्स बी ए बी एंड सी. अभी इफ वी नो दिस मच इन्फॉर्मेशन दी हैव इन हैंड, देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, आई हैव टोल्ड यू कि किसी प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें उसका नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए. ओके, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा. ओके, नाउ इफ यू नो 3 points then you can form vectors joining those points as they've done. ये वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर बना दिया, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ओके, सो one of the vector is suppose b minus a will be lying on the plane. Then if I do c minus a will also be lying on the plane. ये सारे vectors plane पे पड़े हैं. ओके, अभी this vector and this vector both lie on the plane, so their cross product would be perpendicular to the plane. We know cross product of two vectors, इसका direction is always perpendicular to those vectors. तो इसलिए उसने पहले ये vector rs निकाला है, that is b minus a. then rt निकाला है, that is c minus a. and फिर उसका cross product ले लिया है. this would give us vector n. okay, so this r s cross rt has given me vector n. now back to the same problem. अभी तक जो हमारा फॉर्म था कि अब हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गया है, तो क्या फॉर्म थी, r माइनस ए डॉट एन था. तो r माइनस ए बी सी में से कोई भी वेक्टर ले सकते हो आप यहाँ पे, डॉट एन. एन आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके मिल जाएगा. ओके,
तो ये उसने n इवेल्युएट कर दिया, बाकियों में हमें रेडीमेड गिवन था. ओके, सो दिस वुड गिव यू वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ वी नो 3 पॉइंट्स. ठीक है, तो वो 3 पॉइंट्स की हेल्प से एक्चुअली हमने n ही डिड्यूस किया. कार्टेशियन फॉर्म में वही बात होगी. ये कॉम्पोनेंट्स आ गए. हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया x1 y1 z1, सेकेंड x2 y2 z2, थर्ड x3 y3 z3. तो क्या था, r माइनस ए, x i कंपोनेंट j k. देन था हमारा b माइनस ए, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. देन था c माइनस ए, सो 3 माइनस 1 3 माइनस 1. तो ये डिटर्मिनेंट पूरा विल गिव यू द प्लेन्स इक्वेशन. देयर इज अनदर ट्रिक, अभी वो क्वेश्चन आएगा, इन दैट आई विल एक्सप्लेन यू that there is a shortcut, another shortcut we can use for finding equation of a plane when 3 points on it are known to you. Okay.